Okay, so question 31, let's go. Number of ways in which three numbers in AP can be selected from 1 to 3 till n. Three numbers in AP from these many things. Number of ways in which we can do this. या तो ओके सो इसमें कंडीशंस दी हुई है एन इवन है एन ऑड है तो हाँ ठीक है सो दैट्स नाइस लेट्स गो फॉर फर्स्ट द केस व्हेन n इज इवन जब n इवन है तो एग्जैक्टली n अपॉन टू ऑड नंबर्स रहेंगे और एग्जैक्टली n अपॉन टू इवन नंबर्स रहेंगे और हर दो इवन नंबर्स का अरिथमेटिक मीन एक इंटीजर रहता है हर दो ऑड नंबर्स का अरिथमेटिक मीन एक इंटीजर रहता है बट इवन और ऑड नंबर्स का अरिथमेटिक मीन इंटीजर नहीं रहता सो अपने को सिर्फ दो नंबर सिलेक्ट करने हैं ऑड नंबर्स में से और दो नंबर सिलेक्ट करने इवन नंबर्स में से वी विल बी डन बेसिकली सो 2 into n upon 2 c uh choose 2 basically because that's how it's gonna be so 2 into n upon 2 into n minus which is minus 1 so n minus 1 upon sorry n minus 2 upon this that upon 2 factorial so there we go so n into n minus 2 अपॉन 4 और फिर प्लस जो ऑड नंबर्स रहेंगे उसके लिए कितने इवन नंबर्स रहेंगे वेल अपने पास में कितने n टोटल नंबर से n माइनस 1 करूँगा तो ओके तो अपने को पता है कि ऑड नंबर्स रहेंगे वो एक्स्ट्रा रहेंगे और इवन नंबर्स थोड़े कम रहेंगे राइट so n minus 1 upon 2 those many even numbers and n plus 1 upon 2 those many odd numbers right so for example 1 till 3 लिया तो फिर 3 minus 1 upon 2 even numbers यानी कि 1 even number 3 plus 1 upon 2 यानी कि 2 odd numbers right so odd numbers कितने अपने पास में n plus 1 upon 2 that thing choose 2 yeah I think that should be correct यार मैंने 2 times क्यों लिया मुझे नहीं याद रहा wait a second n upon 2 c2 right that's the things for just even number मैंने 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया फिर या मैंने 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया मुझे नहीं याद आ रहा राइट ये मैंने क्यों किया यार so it should just be nc2 and n plus 1 c2 this इनका एडिशन so it's just n upon 2 into n minus 2 upon 2 that thing upon 2 plus n plus 1 upon 2 each is minus 1 so n minus 1 upon 2 yeah so n squared minus 2n plus sorry n squared minus 2n still n squared minus 2n upon 8 plus n squared minus 1 upon 8 so 2n squared minus 2n minus 1 upon 8 that's the way to go so इसको मैं फैक्टराइज कर सकता हूँ नहीं in fact yeah wait a second ये क्या कर रहा हूँ सॉरी ये तो ओह अब मुझे समझा मैंने वो 2 क्यों ऐड किया था मैं भी क्या पागल सॉरी यार क्या हो रहा है आज मेरे साथ तो मैंने इसलिए ऐड किया था क्योंकि ये बेसिकली क्या n upon 2 c2 प्लस n upon 2 c2 क्योंकि इवन भी देखना है अपने को ऑड भी देखना है दोनों देखने और इस केस में n ऑड था इस केस में n इवन था राइट इसलिए वो अलग अलग लिखा था मैंने यानी बाद में मुझे क्या हुआ मैंने उनको सेम कर डाला और यहाँ पे होगा n minus 1 upon 2 c2 yes so this thing would just be n into n minus 2 upon so 2 आएगा और फिर एक और 2 आएगा बट इंटू 2 सो तो गया सो इट्स जस्ट 4 और यहाँ पे n minus 1 और n minus 3 अपॉन 2 तो फिर 8 प्लस n plus 1 into n minus 1 and upon 8 तो फिर n minus 1 upon 8 common n minus 3 plus n plus 1 that's just 2n minus 2 so basically n minus 1 squared upon 4 यहाँ पे और ये चीज होगी n into n minus 2 upon 4 cool so n into n minus 2 upon 4 if n is even and n minus 1 squared upon 4 if n is odd so a and d so first I and d अरे यार क्वेश्चन नंबर 1 का a and b question number 2 okay the tangents at any point p on a standard ellipse with foci s at s dash meet the tangents at the vertices a and a dash and the points p and b dash any point p on the standard ellipse बनाओ एक
ओके इसका क्या द टेंजेंट्स एट एनी पॉइंट लेट्स से पी यहाँ पर with foci s s dash okay meets the tangents at the vertices a and a dash in the points b and b dash vertices a and a dash so ये और ये I think like ये दो lines को ये meet करता है in b and b dash so this thing is b b dash okay no wait I think तुम vertices अलग टाइप से बोल रहे हो तो फिर तुम बोल रहे हो ये एक वर्टेक्स रहेगा इसका हाँ राइट जो हॉरिजॉन्टल रहेंगे वो वर्टेक्स रहेंगे जो ऊपर वाले हैं वो भी वर्टेक्स तुम बोल सकते हो आई डोंट थिंक दोज आर वर्टेक्स सो ये पी है और ये रहेगी अपनी लाइन राइट टेंजेंट्स इन दोनों पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं ओके व्हाट अबाउट इट ठीक है उसका क्या बी टेंजेंट्स ए डैश ओके देन लेंथ ऑफ ए बी सो ये बी है ये बी डैश है फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे कहते एस ये एस डैश रहेगा ये ए है ये बी डैश है सो ए बी टाइम्स ए ये ए डैश सॉरी एंड ए डैश बी डैश ओके इन दोनों की लेंथ मल्टीप्लाई करने के बी स्क्वायर मिलेगा फॉर सम रीजन आई डोंट थिंक सो यार बिकॉज ये जो चीज़ रहेगी ये अपने को बी स्क्वायर देता है और क्लियरली ये चीज़ इससे बड़ा है सो नहीं वेट ये इससे छोटी है और ये इससे बड़ा है सो हाँ हो सकता है ऐसा फिर अपने को बनाना ही पड़ेगा सो क्या एक्स कोसाइन थीटा अपॉन ए प्लस वाई साइन थीटा अपॉन बी दीज आर दी टेंजेंट्स इक्वल टू 1 सो जब x इक्वल टू a हो जाएगा प्लस माइनस a in fact then this would just be y sin theta upon b equal to 1 plus minus c so y would just be b into 1 plus minus c upon sin theta so of course 1 plus cosine theta 1 minus cosine theta is just 1 minus cosine square theta upon sin square theta guess what पूरा गया so yes it's just b squared so a is correct 32 का सॉरी हाँ ये 32 है क्वेश्चन नंबर 1 नहीं क्वेश्चन नंबर सो 31 32 ओके 32 का ए तो है और क्या है ए स्क्वायर नो वे एंगल बी एस वी डैश सो ये एंगल फॉर एग्जांपल दैट थिंग इज 90 डिग्री so okay very weird why should it be 90 degree तो तुम बोल रहे हो कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है seriously with this thing as the diameter wow this is the worst just the worst ऐसा क्यों तुम्हें लगता है कि ऐसा होगा अपने को फिर ढूंढने पड़ेंगे इनफैक्ट या दैट्स नॉट अ गुड थिंग अपने को ढूंढने पड़ेंगे अभी अपने को क्या मिला लेंथ का मल्टीप्लिकेशन और अपने को देखना है कि क्या ये जो दो स्लोप्स है वो नेगेटिव 1 मल्टीप्लाई होते हैं या वी जस्ट हैव टू इनफैक्ट फिगर इट आउट तो ये जो पॉइंट रहेगा दैट विल जस्ट बी a कॉमा तो यहाँ पे पॉजिटिव था ना यहाँ पे पॉजिटिव था तो फिर यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा दैट जस्ट मींस इट्स 1 माइनस कोसाइन थीटा अपॉन सॉरी b into 1 minus cosine theta upon s so b into 1 minus c upon s right similarly ये जो रहेगा that will just be a comma 1 so b into 1 plus c upon s right अब अपने को सिर्फ ये स्लोप देखना है so let's try it out इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ ये जो है ये a e comma 0 है that just means कि क्या नीचे वाला सेम आएगा so जो स्लोप रहेगा that will just be b into 1 minus c upon s upon a into 1 minus e यहाँ भी सेम चीज होगी एक्सेप्ट कि ये b into 1 plus c upon s आ जाएगा upon of course a into 1 minus e so yeah that makes sense मल्टीप्लाई कर लो ये हो जाएगा a squared into 1 minus e का square right and yeah this thing will just be b squared so b squared upon a squared into 1 minus e का square that is this slope and I don't think it's -1 of all things why should it be -1 क्या मैंने कुछ गलत कर दिया that's b squared right there okay yeah it's just
तुमने दो को मल्टीप्लाई किया, प्रॉब्लम क्या है इसमें? सही तो है और क्या? ओ इट शुड बी नेगेटिव, इट शुड बी नेगेटिव है, तभी 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 तभी। तो अब ये अलग आएगा। नाउ दिस विल बी 1 प्लस ई बट देन इन नेगेटिव, सो ये पूरा नेगेटिव में आ जाएगा। नाउ इट्स जस्ट नेगेटिव और ये चीज ऐसी नहीं होगी, हो जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर। तो पहले वही था बट ये अलग वाला। Yeah, and this is of course is b squared, so it's -1. So yeah, C is correct, A is correct, B is not correct. Vs dash Vs is a cyclic order, of course. I mean, so done. A C B. Hmm. सोच रहा हूँ मुझे इस टाइप का एक कंपाइलेशन रखना चाहिए जिसमें सारी मैं एलिस की प्रॉपर्टीज एक बार दिखाई दूँ। 33. If both roots of the quadratic equation exceed p, where p belongs to real, then which of the following is correct? Exceed p. Okay. बट उनका मल्टीप्लीकेशन तो p है और दोनों रूट्स जो है वो p से बड़ी है। ओके, एक्सीड p। देन एक ही तरीका है कि p शुड बी नेगेटिव, राइट? अगर p नेगेटिव, अगर p पॉजिटिव रहा समहाउ, देन बोथ आर ऑफ द सेम साइन। अगर वो दोनों रूट्स नेगेटिव रही तो फिर मुझे मतलब ये समझ ही नहीं आता कि कैसे ऐसा हो सकता है। अगर वो पॉजिटिव रही तो इसका मतलब है कि अल्फा टाइम्स बीटा इज बिगर देन p स्क्वायर्ड। या सो दैट डजंट मेक, मतलब एक जो p से बड़ा है और एक और जो p से बड़ा है, उन दोनों को हमने मल्टीप्लाई। अच्छा हाँ, ऐसा हो सकता है कि p जो है अगर, सो इफ p is bigger than 0, then p must be less than 1, right? Is only in that way can you say कि जो अल्फा बीटा है which is also p, that is bigger than p squared। सिर्फ ऐसे ही ऐसा हो सकता है कि अगर दोनों p से बड़ा है तो this should be happening। okay, if p is less than 0, अगर नेगेटिव रहा then one of them has to be negative, one of them has to be positive, और both, so magnitude wise जो दूसरी रूट रहेगी जो कि नेगेटिव रहेगी, that should be magnitude wise वो छोटी रहेगी p से, and other root can be anything because doesn't matter। yeah, so let's say एक जो है वो अल्फा है, एक जो है वो नेगेटिव बीटा है, जहाँ पे बीटा इज लेस देन p की जगह पे अपन q यूज के वॉट एवर नेगेटिव q यूज कर लेता हूँ, जहाँ पे p जो है वो नेगेटिव q है, so बीटा इज लेस देन q, right? Then roots का product that is negative alpha beta, that is equal to p, so it's negative q, and yeah, basically, so alpha beta is q I think, and thing is कि beta is less than q, so this quantity is less than q times alpha, so alpha should be bigger than 1, right? yeah, that makes sense, so alpha should be bigger than 1। okay, कहाँ पे गया क्वेश्चन अपना? हाँ, या दिस थिंग। सो अगर p नेगेटिव है देन there's one root that's bigger than 1, then that just means okay 1, जब इस चीज में x पर x में तुम कुछ 1 से बड़ा पुट करोगे, it will be something bigger than 1, so something bigger than 2 plus p equal to 0, that just means कि p is or I should say negative q over here, so q is something that's less than 2, so q is less than 2, good। yeah, q less than 2 मतलब कि जो दूसरा रूट था बीटा, that was I mean negative beta, so beta was also less than 2, right? So negative beta is bigger than -2, okay, but that's not really useful क्योंकि यहाँ पे but इसका डेरिवेटिव क्या है? 2x plus 1, so ये जो चीज रहेगी it will be increasing when x is bigger than -1/2, so right now it's decreasing and stuff, okay। इस पे इतना deep नहीं सोचना अपने को। so p can't be positive, well it can be, p can't be negative, it can be, sure it can be negative, greatest integral value of p is 2, so अगर p positive है, and it can definitely be positive, but it cannot be, no it cannot be 2, come on, it's not correct, greatest integral value of p is negative। look, this is just so stupid,
मैंने अभी भी प्रूव किया कि p can be positive if it is less than 1, right? Yeah, what's the problem with it? Oh by the way, it should be less than 1 by 4 because discriminant should be positive, right? Okay, so p squared minus 4 is like, okay, so 1 minus 4 p is bigger than 0, p is less than 1 upon 4. Cool, at least ये तो सही है. हाँ, अगर p less than 1 upon 4 है, then is this wrong for us to say कि इसके एक्चुअल में ऐसे रूट्स नहीं आ सकते? मतलब तुम फॉर एग्जाम्पल p इक्वल टू 1 अपॉन 4 देख लो ना, क्या होता है? 4x² प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0. सो 2x plus 1 equal to 0. So x is just negative 1 upon 2. Oh shit. Oh shit. Oh no. अच्छा, ये प्रॉब्लम हो रही है कि alpha plus beta is negative 1 and alpha times beta is something positive. So both alpha and beta will be negative at the same time, which doesn't make sense. ये तो बहुत सिंपल था. So इसका मतलब है कि हाँ, p पॉजिटिव नहीं हो सकता. हाँ, ये एनालिसिस अपने को समझ आता है कि अगर p पॉजिटिव है then it should be less than 1. Then in this case it should less than 1/4. But अब अपने को दिख रहा है कि हाँ, p in fact पॉजिटिव हो ही नहीं सकता. फिर b is the way to go. Okay, so p cannot be positive. Then we are only left for the negative numbers. अगर p negative है, let's say p is something like minus q. So x squared plus x minus q is equal to 0. Right. Where q is some positive number and दो नंबर्स जो कि एड नेगेटिव होते हैं और मल्टीप्लिकेशन उनका भी नेगेटिव है, मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव रहेगी, तो उनमें से जो नेगेटिव नंबर रहेगा वो बड़ा रहेगा, राइट? आई डोंट नो, लेट्स से जो पॉजिटिव नंबर था वो अल्फा था, देन द नेगेटिव नंबर मस्ट बी नेगेटिव टाइम्स अल्फा प्लस 1. कूल. और या वेल दैट्स नाइस. अब क्या? सो इन दिस केस अपने को क्या करना था वैसे? हाँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ p. सो कोई तरह से इसको रिलेट कर डालूं. Alpha is clearly just some kind of positive number. यार ऐसे तो हजार हो सकते. इनिशियल कंडीशन ये भी थी कि exceed p, so both of them are bigger than p. well ये तो bigger than p रहेगा ही. The other condition is just कि ये चीज bigger than p, मतलब कि alpha plus 1 is smaller than q. Okay, alpha plus 1 is smaller than q, and well, this alpha can be anything, we don't care about that. So and by the way, q is like, sorry, alpha is like some positive number. How does this make sense? It does, because q is also positive. So alpha positive, q positive, cool. So it can, at minimum ये जो q रहेगा, it can be 1. When this equals 1, okay, this is not going to work. Alpha plus 1 is less than q. What? Seriously? But इसका मतलब है कि, well, this is obviously bigger than 1, sure. Therefore p is less than negative 1. Okay, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 हो सकता था, या फिर okay, -2 probably doesn't work then. This is so bad. कोई और इसमें स्ट्रिक्टर इनइक्वालिटी नहीं है क्या? लाइक दिस शुड बी बिगर देन. Come on. Q is just negative p bigger than 1. Wow. p negative p less than -1. That's all it's really saying. ऐसे तो हजार हो सकते. That's not a good thing, and we just want the greatest value, right?
Okay, q bigger than 1, it can also be bigger than 2 or 3 or whatever. क्या गलत हो रहा है? ऐसे दो नंबर्स जो कि -1 पे ऐड होते हो. Yes. Oh, q is alpha into alpha plus 1, right? Okay, that's also something. But do we know कि अल्फा जो है वो क्या bigger than 1 है, less than 1 है? Do we know that? But alpha is, oh yeah, and you know कि alpha is bigger than -2. I mean that's obvious. And the other thing is just that alpha plus 1 is less than q. So ये कोई तो भी चीज है जो कि q से छोटी है, then that means कि ये चीज oh wow, this is very weird. So it's less than alpha times q. So alpha is bigger than 1. Then that means q, which is this thing, it should be actually bigger than 1 into 1 plus 1. So it's bigger than 2. In fact, q is bigger than 2 or equal to 2. Well, वो अपन बाद में देख लेंगे इक्वलिटी होती है कि नहीं होती है. Then that means in fact p is less than or equal to -2. So maybe greatest integer value is -3. Okay, अगर ये strictly less than -2 रहा तो फिर वो -3 हो जाएगा. अच्छा, अगर ये -2 होता है बाय चांस तो क्या होता है? x² plus x minus 2 equal to 0. That just means x plus 1, sorry, x plus 2 into x minus 1 equal to 0. So one root is 1, other is -2. So -2 तो -2 से बड़ा नहीं है. That means कि ये काम नहीं करेगा. So only c, right? c works, and also it can be positive. So c and d. 33 का b and c. ये बहुत लंबा था. Okay, next question 34. 34 is if z1 z2 be complex numbers satisfying this equation, then okay, z1 square minus z2 square इनका magnitude that is equal to this. Seriously, complex numbers. यहाँ पे vectors क्यों लिया इन लोगों ने, पता नहीं. Okay, whatever. The thing is it is z1 minus z2 का magnitude times z1 plus z2. यार ऐसा लिखना सही होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता. And this is equal to magnitude of z1 minus z2 का square, which is also the magnitude of z1 minus z2 उसका square, right? So या तो magnitude of z1 minus z2 is 0, which means कि z1 equal to z2, because that's the only way this can actually happen. So either this is true, or the other choice is magnitude of z1 plus z2 equal to magnitude of z1 minus z2, which is, wow, okay. ठीक है. When does this happen? दो वेक्टर्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के मैग्नीट्यूड सेम हो. तो बहुत बार हो सकता है ऐसा कुछ नहीं कि ये कुछ सिलेक्टेड टाइम्स ही हो, कि ऐसा जरूरी है कि कुछ सिलेक्टेड टाइम्स हो. Okay, let's go for it like this. z1 upon z2 plus 1 is equal to magnitude of course z1 upon z2 minus 1. तो ये जो चीज रहेगी ये कोई तो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है. लेट्स से इट्स x plus iy, then that just means कि x plus 1 का स्क्वायर plus y का स्क्वायर that's equal to x minus 1 squared plus y squared. Well, y can be anything, but the thing is that for this to happen x should be 0. But if x is 0, z1 upon z2, it's purely imaginary in that case. That makes sense. Okay, so c is something that can happen. अगर दोनों equal है then it just becomes 1. So I mean it can also be just 1. It's purely real. I'm gonna go with this one. अच्छा, z1 is not equal to z2, but yeah, then वो दूसरा case नहीं है. फिर it's just z1 upon z2 is purely imaginary. So argument of z1 minus z2, that should be pi upon 2. Yeah, magnitude of course. And yes, that I think that makes sense. So argument goes from, let's say, I don't know, negative pi by 2 से pi by 2 तक, right? Then yeah, pi by 2 is well in the range and it works basically. और magnitude दे दे वैसे भी तो फर्क नहीं पड़ रहा. It's pi by 2. So B and C. Okay, next.
Next is 35. 35th is the planes, this plane and that plane will form a triangular prism if. Okay, these two planes will form a triangular prism. उस टाइप का आ गया वापस. ठीक है. So triangular prism मतलब सेम ट्राइंगल तुम बस रिपीट कर रहे हो. दैट जस्ट मीन्स कि या दैट मीन्स कि वो जो लाइंस रहेगी इनके इंटरसेक्शन की दोज शुड बी कोलिनियर. इसमें कुछ तुमने वेरिएबल सेट किए होंगे लैम्डा, राइट. सो पहले इसका नॉर्मल वेक्टर क्या है? 1 माइनस 1 1. दूसरे इसका क्या है? लैम्डा 2 माइनस 3. तीसरे इसका 3 लैम्डा एंड 1, राइट. कॉन्स्टेंट्स पे ध्यान मत दो, कॉन्स्टेंट्स से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अपने वैसे भी सिर्फ लैम्डा की वैल्यूज चाहिए. ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कुछ ऑप्शंस है वो नहीं, राइट. सो या जस्ट क्रॉस प्रोडक्ट्स निकालो इनके और देखो कि इक्वल होते हैं कि इस तरह से, राइट. और क्या है? कुछ कोई और मेथड है अपने पास में? आई डोंट थिंक सो. सिर्फ नॉर्मल वेक्टर्स है ये अपने पास, राइट. लोग अगर व्हाट वी आर सेइंग इज कि अगर v1 वेक्टर क्रॉस v2 वेक्टर और ये सारे वेक्टर्स फॉर सम रीजन कोलिनियर हो जाए, राइट. सारे हो जाने चाहिए इनफैक्ट, या कि वो प्लेन जहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं वो लाइंस जो रहेगी इट रिप्रेजेंट्स दैट, राइट. सारे हो जाने चाहिए. आई मीन ओके, इसमें बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा. कोई और इजी तरीका है क्या? अगर लेट्स से v2 v1 v3 तीनों को प्लेनर हो गए समहाउ, देन वी आर डन बेसिकली, राइट. और अगर तुम बोल रहे हो कि वो सारे लाइन वेक्टर्स जो रह गए, मतलब नॉर्मल से नॉर्मल वेक्टर्स जो रह गए वो सारे कोलिनियर है, देन दैट जस्ट मीन्स हाँ वो सेम वेक्टर के परपेंडिकुलर प्लेन में है ये तीन वेक्टर्स, ये वो. देन दैट मीन्स वो कोप्लेनर है इनफैक्ट. सो नॉट दैट बैड एक्चुअली. अगर ये तीन कोप्लेनर है देन दैट मीन्स इनका डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा ना, राइट, क्योंकि वो सेम ही लाइन पर है. हाँ, दैट शुड मेक सेंस. So it's just like 1 minus 1 1 lambda 2 negative 3 and 3 lambda 1. ये जो है ये कोप्लेनर वेक्टर्स है. नाइस. तो ये डिटरमिनेंट जीरो हो जाना चाहिए. और ये कैसे करूँगा मैं? ये जीरो कैसे करूँगा? तो यहाँ पे लैम्डा यहाँ पे लैम्डा, दैट्स काइंड ऑफ नॉट गुड. मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा. सो 1 2 माइनस, ओके, सो इसका 2 प्लस 3 लैम्डा दैन इंटू 1, फिर माइनस का प्लस हो जाएगा क्योंकि हाँ, एंड दैट जस्ट बी लैम्डा टाइम्स 1 माइनस माइनस प्लस, माइनस का प्लस 9 एंड फिर प्लस 1 इंटू ये चीज लैम्डा स्क्वायर माइनस 6. ओके कूल. सो लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस 3 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा माइनस 6 प्लस 3, ओके दैट्स 3 एंड ये हो जाएगा प्लस 5 इक्वल टू 0. या दैट्स 5. 4 कैसे आ गया यहाँ पे? This is not going to be nice at all. Okay, क्या गलत किया अब मैंने? यार तो सही लग रहा है सब कुछ. अगर ये सब कुछ सही है तो दैट जस्ट मींस कि इनफैक्ट ये सॉल्यूशंस नहीं है. बट हाउ कैन दैट बी? क्या था ये लैम्डा 3 एंड वेट व्हाट? ओह अच्छा, मैंने कॉपी गलत किया. सो पहला तो 1 माइनस 1 1 था, फिर लैम्डा 3 एंड 2, ओके, और फिर 3 लैम्डा 1, राइट. तो मैंने ये माइनस 3 की, अच्छा मैंने ये 2z माइनस 3 की तरफ देखा डायरेक्टली, तो इट शुड बी 3 एंड 2. तो फिर अब अलग आएगा. सो लेट्स डू इट. 1 के लिए इट्स जस्ट 3 माइनस 2 लैम्डा, फिर ये माइनस 1 का माइनस 1 मतलब प्लस हो जाएगा, एंड दिस विल जस्ट बी लैम्डा लैम्डा माइनस 6, एंड दिस इज गोइंग टू बी लैम्डा स्क्वायर, yeah, lambda minus 6, okay, and that's lambda squared minus 9 I think. So lambda squared minus lambda and minus
12, yes, is equal to 0. So lambda minus 4 into lambda plus 3 equal to 0. So either 4 or minus 3, which means A or B. 36. क्या है 36 में? F and theta is this thing. Then which of the following alternatives is or are correct? 0 to n of 1 upon 4 power n. Okay. Sine power 4 of 2 power n theta. This is just not good. अपने को भी close मतलब सीरीज से कन्वर्ट करना पड़ेगा नॉर्मल कोई भी चीज में. uh, 2 power n you say, मतलब मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर सकता हूँ, राइट? write it like that, sure. And considering the fact कि ये sin squared रहेगा, that means sin squared cosine squared, maybe just maybe. So sine power 4 of let's just go for 2 power n plus 1 theta. That can be written as 2 power 4 आ जाएगा, 2 power 4 sine power 4 2 power n theta, and then the remaining is just cosine power something like that. But मुझे वैसा नहीं चाहिए, मुझे इसको बस स्प्लिट करना है basically. So want to split this, or split करना kind of impossible भी है actually. So नहीं. यार ये प्रॉब्लम मतलब ये हमेशा आएगा और फिर it just becomes impossible. करना ऐसा सही नहीं लगता. क्लोज फॉर्म को चाहिए रहेगा, उसके अलावा ये नहीं होगा सॉल्व. सो 2 पावर 4, लुक ये चीज तो मुझे चाहिए किसी भी तरह से, बट जो दूसरी बची हुई चीजें मे बी मैं उसको यूज कर सकता हूँ किसी भी तरह से, यू नो. ओके, व्हाट अबाउट लाइक आई स्प्लिट दिस कोसाइन प्लस साइन or something like that. No, no, you have to split it like this 1 minus 2. नहीं यार, 1 minus 2 s और फिर वो सब वो पागलपन है. Or is it? शायद से maybe, just maybe. So it's gonna be what, 2s to the power of 4 plus right? So just 1 minus s squared. Okay, it's gonna be squared actually. Plus s power 4, right? So this will be 2 power 4 into, अगर इसको properly split करो, s power 4 minus s power 6 plus, let's see, s power 6. नहीं, बट ये चेंज हो रहा है, नॉट व्हाट वी वांट. As expected, the worst. It's just the worst. कोई और तरीके से करना पड़ेगा. So maybe मैं इसको ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ, साइन स्क्वायर ऑफ 2 पावर n plus 1 थीटा, एंड देन द रिमेनिंग स्टफ उसको मैं ब्रेक करूंगा इनटू 2 पावर 2 plus साइन स्क्वायर, या and sine square and then cosine square n, right? मतलब हाँ, 2 power n theta and all that stuff, you know. इसको मैं इनफैक्ट n plus 1 लिखता हूँ डायरेक्टली, इतना सब लिखने से अच्छा. ओके कूल. तो मे बी मैं इसको थोड़ा सा स्प्लिट कर पाऊँ, जस्ट बी साइन, ओके, plus 1 and basically what, 4 into all that stuff, और फिर ये हो जाएगा sine power 2 and then n minus sine power 4. Okay, this is getting out of hand. Sine power 4n. This makes no sense. Yeah, this makes no sense. I just turned into cosine 2n. Okay, वो भी काम नहीं करेगा यार. 2 power n theta. Somehow I was this. Look, sine power 4 in terms of sine. No, that's not a good idea. Not a good idea at all.
कुछ तो भी ऐसा चाहिए रहेगा जो कि इसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर सके. You think we'll get this? केवल दैट्स कोसाइन स्क्वायर थीटा, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ क्या? So what I'm thinking is कि 4 sin squared n plus 1 sin squared n and then minus, क्योंकि अपन ऑलरेडी वो वहाँ पे 4 ला चुके हैं, why not treat it a little differently, like इसको मैं हाँ कोसाइन 2 में कन्वर्ट करने का ट्राई करूँ और मे बी वो कुछ अपने को दे दे. सो साइन स्क्वायर ऑफ n प्लस 1, और जो यहाँ पे 2 में अंदर डालूंगा और फिर जस्ट 2 साइन स्क्वायर उसका स्क्वायर, सो इट्स 1 माइनस कोसाइन ऑफ n प्लस 1 का स्क्वायर. So it's 4 sine squared sub n plus 1 sine squared n. Maybe, just maybe ये काम कर जाए actually. So, yeah, like ये जाएगा sine squared n plus 1 and 1 minus 2 cosine squared of n plus 1 plus cosine power, sorry, plus 2 cosine, सिर्फ cosine, okay. No. ये भी काम करेगा. यहाँ पे ये तो स्प्लिट हो जाएगा, बट ये स्टिल बचा रहेगा. सो हाउ एम आई गोइंग टू डू इट? ये तो बहुत लंबा हो रहा है यार. सोचो, मे बी इसको चेंज करो. नहीं, वो फिर सर्कुलरली अपन सेम चीज करेंगे, वो पागलपन है. इट्स नॉट वर्थ एनीथिंग. क्योंकि साइंस पर और कोसाइंस पर में कन्वर्ट करना ज़्यादा बेटर हो सकता है. Yeah. No, it makes no sense. 2 plus 12 is something. 4 power n. So you know कि अपने को 2 में ब्रेक करना पड़ेगा, और फिर मे बी अपन सही भी जा रहे हैं, बट कैसे मैं इसे किसी टेलीस्कोपिक सीरीज में कन्वर्ट कर सकता हूँ, राइट? तो यहाँ पे मुझे 4 तो मिल रहा है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. थिंग इज मुझे इसको 2 इसमें ब्रेक करना है, 2 इसमें ब्रेक करना है. One. ओनली वे आई नो इस चीज़ को 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर पे उस टाइप की चीज़ में कुछ भी कन्वर्ट कर, और जस्ट होप कि वो कुछ अच्छा दे दे, बट दैट्स नॉट, इट्स नॉट द बेस्ट थिंग टू डू. बट यहाँ पे मुझे एटलीस्ट 2n वगैरह मिल रहा है, तो लेट्स गो फॉर इट. दैट ओके, प्लस कोसाइन स्क्वायर ऑफ n प्लस 1, राइट? सो मे बी जस्ट क्योंकि n प्लस 1 वगैरह में है तो शायद से कुछ काम कर जाए. सो इट्स जस्ट व्हाट 4 साइन स्क्वायर. अच्छा, ये साइन स्क्वायर n और यहाँ पे -1 आएगा, उसमें नेगेटिव 4 साइन स्क्वायर ऑफ n प्लस 1 कोसाइन स्क्वायर n लिख सकता हूँ. ओके, और जो बचा हुआ रहेगा इट्स जस्ट प्लस 2 कोसाइन sin squared of n plus 1 into cosine of n plus 1, which I think I can convert into a normal cosine, right? Yeah, now this is making sense. Now it's making sense. So the thing was कि अपने को 2 उस टाइप से उसमें ब्रेक करना था, राइट? तो अपन ने एक बार इस टाइप से ब्रेक किया. सो वो जो 4 था उसको पूरा यूज करने से अच्छा सिर्फ 1 माइनस कोसाइन ऑफ 2n प्लस 1 इंटू, अगर सिर्फ मैं कोसाइन लिखता तो क्या होता? कोसाइन स्क्वायर एन, दैट इज नहीं नहीं नहीं, फिर वो अपन इसमें और कंटिन्यू नहीं कर पाते. यहाँ पे अपने को 2n प्लस 1 मिल रहा है, वो अपन यूज कर सकते हैं, राइट? सो माइनस लेट्स से 1/4 of sine n plus 2 ka square. So look at that. This is nice, I think. Okay, so now it's just going to be what? Sine square n plus 1 common le lo, and you can write this, in fact 2 sine square n plus 1 common le lo, just negative 2 cosine squared n plus 1. Got it. Minus 1/4 sine squared of n plus 2. So this thing is just negative 2 sine squared of n plus 1 cosine of n plus 1. No way.
स्क्वायर अगर तो फिर इजी होता था, बट यहाँ पे तो कुछ और ही हो रहा है। नो वे, सीरियसली अब क्या गड़बड़ हुई इसमें। ओह वेट, यहाँ पे कोसाइन n प्लस वन क्यों? शिट, शिट, राइट, मुझे उसको कन्वर्ट करना था। यहाँ पे अपन ने टू साइन स्क्वायर एन प्लस वन कॉमन लेते, टू कोसाइन स्क्वायर एन, और ये हो जाएगा कोसाइन ऑफ एन प्लस वन। राइट राइट राइट, एंड दैट actually does make sense. So ये हो जाएगा कोसाइन ऑफ n plus 1 like this. So ये सब नहीं होगा. It is just, this thing is just 1 actually. So it's just 2 sine squared of n plus 1 minus 1/4 of sine squared n plus 2. अपने को ये मिला. Let's just check. Let's go back and see कि क्या actually में काम करता है. So this thing कि sin power 4 n plus 1 को मैं इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ in 2 sine squares. So this thing is pretty much just what, यहाँ पे 4 आ जाएगा. Oh, यहाँ पे n plus 2 है. So in other words, sin power 4n को मैं 2 sine squared n minus 1/4 sine squared n plus 1 में कन्वर्ट कर सकता था, right? Which because what's it's like 2 sine squared n, और यहाँ पे जाएगा माइनस, वो 4 चला जाएगा. It's just sine squared of n cosine squared of n as well, and that's just sine squared n into what, 2 minus cosine squared n. No wait, what? अपने को ये चीज चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए रहेगा ना यार. नो मैटर, यहाँ पे सिर्फ 1 डाल दिए. हाँ, फिर अब ठीक रहेगा आई थिंक, बिकॉज यहाँ पे 4 आ जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा. नाउ इट कैन बी रिटन जस्ट लाइक दैट. ओह ओके ओके, नाउ आई गॉट इट. सो द मेथड वाज कि तुम साइन पावर 4 को साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करो, और फिर इसको लिखो साइन स्क्वायर माइनस 1/4 ऑफ साइन डैश का स्क्वायर, जहाँ पे साइन डैश बन जाएगा 2n हो जाएगा उसका. सो या दिस मेक्स सेंस. यहाँ पे 2 नहीं चाहिए, यहाँ पे सिर्फ 1 चाहिए, बट अदरवाइज अपने को मेथड समझ गई. इतना सब अपन ने किया और ये इतना ऐसे शॉर्ट टाइप का था, ये बहुत बहुत गलत था यार ये. ओके, एटलीस्ट यू गॉट इट. अब अपन टेलीस्कोप कर सकते हैं. सो बेसिकली साइन पावर 4 है, ये गंदी सी चीज लिखने से चाहे अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं. साइन पावर 4n अपॉन 4 पावर n, राइट? दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग एट. दैट थिंग इज sin squared n upon 4 power n minus sin squared n plus 1 upon 4 power n plus 1. Got it, a telescopic series finally. So अपन start करने वाले 0 से, right? So when you put n equal to 0, ये just sin theta हो जाएगा. So yeah, it's just sin squared 0 upon 4 power 0 is just 1 minus sin squared of, क्या कर रहा था मैं, हाँ, साइन स्क्वायर ऑफ 1, ये 0 चाहिए, 1 अपॉन 4 पावर n plus 1 का. सो इट्स गोना बी 2 आई थिंक, राइट? सो 4 की पावर नहीं 1 था, तो फिर 1, जस्ट 1, एंड देन नेक्स्ट विल बी साइन स्क्वायर 1 अपॉन 4 पावर 1 साइन स्क्वायर 2 अपॉन 4 पावर. चलते जाएगा टिल यू इवेंचुअली गेट क्या, तुम n लोगे, right? So it's going to be sine squared sub n upon 4 power n minus sine squared sub n plus 1 upon 4 power n plus 1, because this is going to be like that. तो ये सब कुछ कैंसिल होने वाला है एक्सेप्ट ये चीज. आई मीन ये तो 0 अप्रोच कर रहा है एनीवे, बट या अब इसको अपन स्टिल रखेंगे इनफैक्ट. सो इट्स जस्ट साइन स्क्वायर ऑफ 2 power 0 थीटा इज जस्ट थीटा. सो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 minus sine squared of 2 power n plus 1 theta upon 4 power n plus 1. Done. That is what f actually is. Okay, अब इसका क्या करना है आपको?
So the following alternative is all correct. So f sub 2 of pi upon 4, that is 1 upon square root 2. ठीक है, ऐसे पाई अपॉन 4 पुट करके देखो, फिर अपन इसको इसी तरह से लिख देते हैं एफ ऑफ, ठीक है, एफ सब एन थीटा दैट इज साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 4 पावर n प्लस 1 साइन स्क्वायर 2 पावर n प्लस 1 थीटा, डन। सो एफ सब 2 ऑफ पाई अपॉन 4, उसमें n की वैल्यू 2 रखोगे तो फिर इट्स जस्ट साइन स्क्वायर पाई अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन n की वैल्यू क्या है 2, सो 4 पावर 3 साइन स्क्वायर ऑफ 2 की पावर 3 इज जस्ट 8, सो 8 टाइम्स पाई अपॉन 4 इज 2 पाई, तो ये तो वैसे भी मर गया, सो इट्स जस्ट साइन स्क्वायर ऑफ पाई अपॉन 4 विच इज 1 अपॉन 2, सो इट्स नॉट 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2। एफ सब 3 ऑफ पाई अपॉन 8, सो यहाँ पे राइट, यहाँ पे 16 आ जाएगा और फिर यहाँ पे पाई अपॉन 8, सो इट्स गोना बी 2 पाई वंस अगेन, तो ये तो वैसे भी गया, सो इट्स जस्ट साइन स्क्वायर ऑफ पाई अपॉन 8 बेसिकली, राइट। सो हाउ डू यू फिगर आउट साइन स्क्वायर ऑफ पाई अपॉन 8 क्या रहता है? You know कि cosine of pi upon 4 is 1 upon square root 2, it's equal to 1 minus 2 sine squared of pi upon 8, so sine squared pi upon 8 is 1 minus 1 upon square root 2, that thing upon 2, which is square root 2 minus 1 upon 2 square root 2, something like that, square root से multiply कर डालो, so it's just 2 minus square root 2 upon 2, cool। Not this, okay यार सीरियसली ये तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। ओके और क्या है अपने पास में? कुछ अपने गलत किया क्या इसमें? नहीं, सब कुछ सही था। एफ सब 4 और 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, ओके, और 2 पावर 5 32, 30 टाइम्स ये कुछ तो भी इवन नंबर थे तो चला जाएगा पूरा, एंड साइन स्क्वायर ऑफ 3 पाई बाय 2 well that just 1, so C is correct at least, एंड ये तो अपने को दिख ही रहा है कि ये चला जाएगा पूरा, और फिर ये yeah it's 0, so C and D are correct। Question number 37, a parabola is drawn through this having tangents to x square plus y squared equal to x, as its directrix, draw करो इसको, drawn through 2 points, तो पहले तो ये सर्कल ड्रॉ करते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू a स्क्वायर, ओके, इस पे एक टेंजेंट कोई तो भी ड्रॉ किया, ये उसकी डायरेक्ट्रिक्स है, एंड इट्स पासिंग थ्रू दिस पॉइंट -2,0, व्हाट, somewhere over here, maybe like that, or maybe like this and this, but ऐसे तो हजारों पैराबोला हो सकते हैं, राइट। locus of this parabola will be right, okay, locus of the focus of this sorry yeah, locus of the focus of this parabola will be right। तो 2 पॉइंट्स पता है तुम्हें जो कि कोई भी डायरेक्टली तुम ऐसे लेते हो, यहाँ पे जो डिस्टेंसेस रहेगी सेम डिस्टेंसेस फोकस के लिए होने चाहिए, ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसके डिस्टेंस सेम हो जाते हैं, यानी वो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है इसमें। certainly not the focal chord, it's certainly not the focal chord, okay, so just some random point जिसमें ये distances equal हो जाए, yeah, तो बहुत बुरा है, perpendicular distances you say, something more than just perpendicular distances, I want something more than that, so instead of saying perpendicular distances you could just use, क्योंकि बेसिकली सिर्फ एक लाइन है और वहां पे तुम्हें पर्टिकुलर डिस्टेंसेस यूज करना है, तो फिर तुम्हें काम करो ना कि या लाइक ये जैसे कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है फॉर एग्जांपल परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस इस टाइप से, गॉड व्हाट डू यू नो, अच्छा ये जो पॉइंट रहेगा जस्ट इज दिस ऑलवेज गोइंग टू बी कि ये दोनों इक्वल रहेंगे, आई थिंक ऐसा था,
आई मीन ऑफ कोर्स बिकॉज थेल्स थ्योरम एंड स्टफ, सो राइट, क्योंकि जो पूरा ट्राइंगल बनेगा ये इस टू ये इस टू ये, तो ये अगर पार्ट्स ऐसे तो फिर इनका रेशियो जो स्केलिंग रहेगी वो भी सेम फैक्टर से होगी, राइट, क्योंकि ये सारे परपेंडिकुलर, ये एंगल कांस्टेंट है, तो हाँ, देन दैट मींस इन फैक्ट यस, ये जो दो रहेंगे दैट विल बी ऑफ द सेम लेंथ. ओह नाइस. सो इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट दीज टू रेशियोज अपन डायरेक्टली ये दो रेशियोज की बात कर सकते हैं. तो फिर अब अपने कोई टेंजेंट के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, अपन डायरेक्टली सिर्फ ये दो पॉइंट्स के बारे में सोचेंगे. ये दो पॉइंट्स का रेशियोज जो रहेंगे फ्रॉम या दीज टू, राइट, फोकस से इसकी जो डिस्टेंसेस रहेगी वो भी सेम रेशियो में रहेगी हमेशा. इनफैक्ट सेम रेशियो भी नहीं, इक्वल रहेगी डिस्टेंसेस. नहीं, इक्वल नहीं रहेगी. It's getting complicated. Negative 2,0 stuff. एटलीस्ट तुम्हें पता है कि जो रेशियोज रहेंगे, मतलब हाँ, डिस्टेंस इक्वल है टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, बस उनके जो रेशियोज रहेंगे दोज रेशियोज दोज विल बी सेम थिंग एज इसका रेशियो और इसका रेशियो. एंड गेस व्हाट, इसके जो एंगल बाइसेक्टर्स रहते हैं उनका रेशियो तो सेम. हाँ, थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है ना. और ये एक सर्कल में नहीं 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 नहीं, रेशियोज की बात नहीं करनी चाहिए अपने को नॉर्मल. तो फिर क्या सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज करूँ? वो तो और बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि कोई इजी सोल्यूशन अपने को देखते ही नहीं आएगा, कुछ स्पॉट ही नहीं करता आएगा. तो सिर्फ ये पता है कि ये जो दो है इनके लेंस इक्वल चाहिए फॉर सम रीजन. ऐसा एक पॉइंट ढूंढना है हमें, लाइक दो पॉइंट सकते हैं, बट यू आर सेइंग कि ये डायरेक्टली से, हाँ नहीं यार, स्टिल दो पॉइंट सकते हैं, स्टिल दो पॉइंट सकते हैं. मतलब यहाँ से तुम एक आर्क क्रिएट करोगे, यहाँ से तुम एक आर्क क्रिएट करोगे, समवेयर ओवर हियर तुम्हारे पास में एक फोकस मिलेगा तुम्हें. और हो सकता है कि तुम यही सेम आर्क एक्सटेंड करो तो तुम्हें दो फोकस मिलेगा इनफैक्ट. तो गारंटी. कम ऑन, सोच. पावर ऑफ पॉइंट समथिंग. नो, जस्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और कोई तरीका नहीं है. सो या पैरामीटराइज्ड एक टेंजेंट ढूंढो एंड जस्ट डू इट बेसिकली. दिस इज वेरी बैड. सो ellipse, circle, hyperbola if a is less than 1, parabola for all values of a. तो अपने को जनरल a के लिए ढूंढना पड़ेगा. दिस इज वर्स्ट. ठीक है, तो फिर इनफैक्ट ये पॉइंट्स अंदर है ऐसा भी अपन नहीं सोच सकते. तो यहाँ ये तो पूरा सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे आ गया, तो बस है कहीं तो भी, राइट. ये सेंटर पॉइंट है. तो टेंजेंट जो रहेगा, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस, सॉरी व्हाट्स द इक्वेशन ऑफ दिस टेंजेंट. लेट्स से ये जो वेक्टर है, दिस वेक्टर इज a कॉमा b. a कॉमा b से अच्छा इसको बोलता हूँ मैं कोसाइन थीटा कॉमा साइन थीटा. इट्स दिस नॉर्मल वेक्टर. then it becomes clear कि x cosine theta plus y sin theta is equal to a, क्योंकि ये रेडियस a था. so that will be this thing, right. तो अपने को लाइन तो मिल गई, और अब अपने को चाहिए the distance of these 2 points. so negative 2,0 का इससे डिस्टेंस. यार ये इतना बुरा क्यों है आखिर. सो नेगेटिव 2 इसमें पुट करो एंड दिस विल व्हाट इट्स लाइक 2 cosine theta plus a upon स्क्वायर रूट ऑफ कोसाइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, तो 1 ही हो जाएगा अपने आप. ओके, एंड ये पहला डिस्टेंस है, दैट्स इज L1, L2 इज, सो ये नेगेटिव 2,0 से है और 2,0 से हो जाएगा a minus 2c, because yes, this thing is a plus 2c. and जो फोकस है that is
these many distances away from the thing. So right. Oh, come on. It lies on that kind of radial axis stuff, and this is worst. So x minus of minus 2 is like x plus 2 का square plus y squared equal to ये L1 squared, like that's the distance, so L1 squared. And similarly x minus 2 का square plus y squared equal to L2 square. तो ये दूसरा इक्वेशन. सो इनकी जो रेडियल एक्सेस रहेगी दैट विल बी द, इनफैक्ट अपने को वो भी नहीं देखना, तो एक्चुअली पॉइंट कौन सा है वो देखना पड़ेगा. सीरियसली, हाउ एम आई सपोज टू फाइंड दैट पॉइंट? आई डोंट नो. ओके ओके, सो इसकी रेडियल एक्सेस मे भी काम कर जाए, बिकॉज या टर्न्स आउट कि इसकी रेडियल एक्सेस हमेशा वर्टिकल रहती है. सो you can directly figure out कि x की क्या वैल्यू होनी चाहिए, और x वैल्यू मिलती तो y की वैल्यू हो जाएगी, बिकॉज कोई भी इक्वेशन यूज कर लो. सो subtract, seriously यार, this is 4x is equal to L1 square minus L2 square, and yeah, that's at least वो तो कांस्टेंट है, मतलब उतना तो भी अच्छा है. और y कैसे ढूंढूंगा मैं, इसमें पुट करना पड़ेगा. once again that's problematic. y की दो वैल्यूज कैसे ढूंढेंगे, सपोर्ट करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है. L1 squared minus L2 squared upon 4 plus 2. एटलीस्ट ये स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर कुछ अच्छा तो भी देता है अपने को. It's just 8ac, so 8ac upon 4, that's just 2ac, so 2ac plus 2 का square plus y squared is equal to L1 squared, and L1 squared is just a squared plus 4ac plus c squared, sorry, plus 4c squared. So y squared is a squared plus 4ac plus 4c squared minus, so first just 4ac squared. Oh God, this is just worst. 4 and 4 is 8. Yeah, 4 figure. You get it. 2, this is 8 ac, and then negative 4a squared c squared. Why is this so, like, नहीं यार, ये क्या है? That's the way it is. Okay, and then minus 4. Wow. Minus 4 over here, ये पूरा चल जाएगा, and it's a squared into 1 minus 4c square, और बचा हुआ क्या पार्ट है, minus 4ac, and finally this thing. This is the worst. This is the worst. ये क्या है, ये 8ac, right? So x is just 2ac and y is all of this mess, right? It's this stuff. But at least 4c square minus 1 is just negative 4 sine squared. Okay, और क्या क्या इसमें? That's y squared actually. So minus 4 sine squared, and then you have ये चीज. Yeah. बहुत घटिया है ये. So a squared minus 4ac minus 4a squared c squared. That is what y squared is. यार ये बहुत ही अजीब है, मुझे करने की इच्छा नहीं हो रही है. ऑलमोस्ट आ गए थे हम, एंड टर्न्स आउट कि अपने को अब कोसाइन को इन टर्म्स ऑफ एक्स रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, और राइट, सो एटलीस्ट ये कोनिक तो है, राइट? ओके, सो लेट्स डू इट. y squared is really bad. What would happen कि अगर मैं
नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं सोचा था कि मैं कोसाइन को डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकता हूँ क्या, बट वो पॉसिबिलिटी नहीं है कि है फॉर सम यार। ये कैसे, इट्स लाइक स्क्वायर रूट ऑफ ये सब कुछ, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस टू। हे, दैट्स जस्ट एन इलिप्स यार, मैंने पहले क्यों नहीं देखा ये, इतना इजी, इतना सारा कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं थी। इट्स जस्ट एक्स माइनस टू का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट्स इक्वल टू, सो L1 प्लस L2 दैट्स इट, इट्स जस्ट 2a, इट्स जस्ट एन एलिप्स सेंटर्ड एट माइनस टू कॉमा जीरो एंड टू कॉमा जीरो। ये जो है ये इसकी फोकाई है, और ये जो है ये 2a इज द, yeah, 2 is that length, so basically a is semi-major axis. Oh, it's an ellipse in any kind of condition, right? Oh, seriously. I mean, yeah, एक point से distance plus दूसरे point से distance. Oh, yeah. So L1 squared and L2 squared. तो आपको एक्चुअली mod लेने पड़ेगा यहाँ पे. So it's either just 2a जब ये positive रहेंगे दोनों L1 L2. So when this cannot actually reach this, right? So when a is bigger than 2, क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, a minus 2, दोनों दोनों इसके एक्सप्रेशंस की, then that means अगर a bigger than 2 है then it's an ellipse, so at least a तो correct है. Hyperbola if a is less than 2, uh, no, some parts ellipse रहेगा, some parts hyperbolic रहेगा, not sure. Okay, a circle for all values of, wait, no, you know what, if a is less than 2, तो कुछ भी एक वैल्यू ऐसी रहेगी जो कि पॉजिटिव रहेगी और दूसरी वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहेगी। दैट जस्ट मींस कि अपन एक्चुअली इसको सब्ट्रैक्ट करने वाले इक्वल टू 4 कोसाइन समथिंग, नहीं वो क्लियर नहीं है, राइट? सो लेट्स से L1 इज a प्लस 2c और L2 इज 2c माइनस a, बिकॉज a बहुत छोटा था। देन अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। देन एक्चुअली या इट्स एन हाइपरबोला, so A is correct, B is correct, a circle for all values of A, no, that's just bad, a parabola for, okay, so A and B is the way to go. This was the worst. Question 38. 38 is in f of x. You know what, okay, एक घंटा हो गया, I'll just stop here. Wow, बहुत बहुत बढ़िया, सिर्फ 7 क्वेश्चंस हुए। कैसे टाइप के क्वेश्चंस थे यार, मतलब ठीक है जो भी है, इसी का नेक्स्ट वीडियो।